हाय गाइस, तो आज मैं आई हूँ वडोदरा में सन फार्मा एरिया में। जो यहाँ का फेमस वाला हांडवा है वो खाने, मैंने यहाँ के हांडवा की तारीफ़ बहुत ज़्यादा सुनी है। हांडवा जो गुजरातियों का ऑथेंटिक डिश है, सो मैंने कहा चलो ये जाके ट्राई तो करना बनता है कि लाइक इतना तो क्या ही है इसमें। सो जी हाँ, मैं यहाँ पर पहुँच गई और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची मैंने देखा ऑलरेडी लोग वेटिंग में है। पता नहीं मेरा तो चांस कभी आएगा। फिर मैंने सोचा चलो तब तक थोड़ा किचन एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने इनको पूछा कि क्या मैं किचन में जा सकती हूँ, तो इन्होंने फटिक से बोला जी हाँ आप किचन में जा सकते हो। आई कांट बिलीव इट, आज की डेट में किचन में जाना कौन ही अलाउ करता है यार। और जैसे ही मैं किचन में गई पहले तो मुझे ये 3 बैटर दिखे। इनके शायद 3 टाइप के हांडवाज है यहाँ पर। और गाइस देखो ये इतने सारे हांडवाज एक साथ बन रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये लाइव हांडवा मेरे सामने बन रहा है। जी हाँ, इनका कोई तो स्पेशल, ये पूरा बैटर डाल के इन्होंने अपना कोई स्पेशल मसाला डाला और ये इनका शायद कॉर्न वाला हांडवा है। सो येस, और देखो गाइज इनका किचन यहाँ कितना ज़्यादा क्लीन है। लाइक इतना ज़्यादा हाइजीन कौन ही मेंटेन करता है। ये देख के मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे घर का ही किचन है। तो गाइज यहाँ पर ये लोग हाइजीन तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी। और देखो ये मिक्स हांडवास पैक हो रहे हैं यहाँ पर। शायद इनका मिक्स हांडवा ज़्यादा चलता है, गॉड नोज़। सो देखो ये लोग भी अपना वेट कर रहे हैं, इनका हांडवा आ चुका है। अभी जैसे ही इन लोगों ने इन लोगों ने बाइट ली, उसके बाद हम लोग इनके पास जाएंगे और रिव्यू पूछेंगे कि इन लोगों को यहाँ का हांडवा कैसे लगता है एंड ऑल। चलो गाइस देखते हैं। तो તમે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી આવો છો? હું જ્યારથી એમણે આ સુવર્ણ હાંડવો શરૂ કર્યો છે ત્યારથી રેગ્યુલર અમે એમના કસ્ટમર છે ને દરરોજ આવીએ છીએ. ઓકે, છેલ્લા 3 વર્ષથી અમે રેગ્યુલર કસ્ટમર છે અને આના જેવો વડોદરામાં અમે કોઈ દિવસ ચાખ્યો નથી હાંડવો. એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. ઘરે અમે પ્રયત્ન કર્યો પણ આવો બનતો નથી. ઘરેથી પણ સારો. હા, ઘર કરતા પણ ઘરનો સારો જ છે. ટેસ્ટ સમજો ને. અને આવો કોઈ જગ્યાએ અમે ખાવા મળતો નથી. તો તમને શું લાગે છે લોકો અહીંયા આવવું જોઈએ? 100% અહીંયા જ આવવું ના જોઈએ. હોય તો કઈ વાંધો નહીં, પણ એકવાર પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. અહીંયા ટેસ્ટ કરવો આગળ જોઈએ અહીંયા આવીને અને એનો લાભ લેવો જોઈએ. અહીંયા ખાવા આવીએ છે. અચ્છા, હા, ઘરે બનાવવાનું જ બંધ કરી દીધું છે. આનું એક વાર લેવો જરૂરી છે. એક વાર ટેસ્ટ કરશો તો વારંવાર અહીંયાનું જ આવશે. દેટ એ મારી શ્યોરિટી. चलो कुछ और लोगों के रिव्यूज लेते गए। हाँ। पूरी फैमिली आया છો? હા, ફૂલ ફેમિલી સાથે છે. અને કેટલા ટાઈમથી આવો છો અહીંયા? મતલબ એમનું જ્યારનું ઓપનિંગ છે, સ્ટાર્ટિંગ છે ત્યારથી અમે લોકો ઇવન પહેલાં એમનું એમાં આગળ જે ખુસરો માર્કેટ હતું ત્યારે પણ એ જે એમનું ઓપનિંગ હતું તે વખતથી જ અમે રેગ્યુલર એમના કસ્ટમર છે. सो गाइस इनके रेगुलर कस्टमर भी है, जैसे मैंने अभी देखा। इन लोगों का ये लोग इतना अच्छा सर्व करते हैं क्वालिटी के साथ। और देखो अगर आप वडोदरा में रहते हो तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर। चलो कुछ और लोगों के साथ बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा हांडवा ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा मक्के कौन? आप गुजराती हो? हाँ गुजराती है। गुजराती लोग तो घर पे बनाते हैं ना? नहीं इनका थोड़ा अलग होता है, इनका थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है। जैसा ही टेस्ट है. हाँ और अच्छा। हाँ घर जैसा ही लगता है। चलो अब उनसे बात करते हैं जो खुद यहाँ हांडवा बनाते हैं, जो ऑनर है। આજે અમને અહીંયા કઈ હાંડવો ખાવા મળવાનો છે? દૂધી હાંડવો, મકાઈ હાંડવો, મેથી હાંડવો અને મિક્સ વેજીટેબલ હાંડવો. મિક્સ વેજીટેબલમાં દૂધી, મેથી, મકાઈ ત્રણેય મિક્સ આવે છે. અચ્છા, અને આ તમારી શોપ સવારે કેટલા વાગે ઓપન થાય છે, રાતે કેટલા વાગે બંધ થાય છે? સવારે 11 થી સાંજે 10 વાગ્યા સુધી. ઓકે, તમારી આમાં કોઈ ખાસ એટલે સ્પેશિયલ હાંડવો ખરો? હા, દૂધી હાંડવો અને મિક્સ વેજીટેબલ હાંડવો. ઓકે, સો તમે આ શોપ ક્યારે ચાલુ કરી હતી? કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો? કોરોના પહેલા ચાલુ હતી પણ પછી કોરોના આવ્યો ટૂંક સમયમાં, એટલે સમય અનુસાર બંધ કરવી પડી. પછી 2.5 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ છે. આંટી હાંડવો તો ઘરે પણ બનાવે છે અને આ ગુજરાતમાં છે, વડોદરામાં. સો ગુજરાતી ઘરમાં પ્રિફર કરે છે હાંડવો બનાવવા, તો લોકો અહીંયા તમારી ત્યાં આવીને હાંડવો કેમ ખાય? આવું શું સ્પેશિયલ છે એમાં? હાંડવો તો બધા ઘરે બનાવે જ છે પણ અહીંયા ઘર જેવું અને કંઈક અલગ ટેસ્ટ મળશે. તમે એક વખત અહીંયા દુકાન પર આવી અને ન્યૂ સુવર્ણ હાંડવાની મુલાકાત લો, તમને ચોક્કસ આ વસ્તુ પસંદ આવશે. અહીંયા આવો હોય તો એનું એડ્રેસ? ઓનિક્સ બિઝનેસ સેન્ટર, જ્યુપિટર હોસ્પિટલ પાસે, લાયન્સ મસાલા મિલની સામે, બ્રહ્મકુમારી, સનફાર્મા રોડ, અટલાદરા. गाइज़ ये है इनका मेन्यू कार्ड। इनके सारे रेट भी ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखो फाइनली मेरा हांडवा आ चुका है। लेट्स सी टेस्ट करके कि ये कैसा है। और गाइज़ जैसे ही मैंने यहाँ पर एक बाइट लिया मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कीप वॉचिंग।